Hi. So, topic of this video is risk premium, and we'll be understanding this concept through an example. And I'm picking an example from IIT JAM Economics exam of 2021. Okay, so this is the question on uh, which we'll be using to understand this concept. All right. So, question is that utility from wealth for an individual is given by this function under root W. Okay, where W is the wealth. The individual owns a risky asset that is equally likely to yield either rupees 400 or rupees 900. And you have to find out the risk premium in this case. Okay. So let's understand what is risk premium. So risk premium is the amount that a risk averse person will pay to avoid taking a risk. Okay. So, and who is a risk averse person? Well, if somebody is risk averse, they have a diminishing marginal utility to wealth. Okay. That means their utility function is concave. So, for uh, example of utility functions of a risk averse person can be if W is well, then under root W or log of W. These are some examples of utility functions of a risk averse person. Okay. तो हर एडिशनल यूनिट ऑफ वेल्थ से मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है ओके दैट्स व्हाट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू वेल्थ मींस ओके सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस तो जो इसका कर्व है इट विल बी कॉनकेव कर्व ओके एंड वी नो दैट कॉनकेव कर्व के केस में जो स्लोप है वो डिक्रीज होती जा रही है ठीक है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है ओके सो ऑन दिस एक्सिस वी हैव यूटिलिटी ऑन दिस एक्सिस वी हैव वेल्थ तो सिंस जो स्लोप होगा इस यूटिलिटी का वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी तो दिस मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग जो स्लोप है वो कम होती जा रही है इट इज गेटिंग द टेंजेंट्स आर गेटिंग फ्लैटर एंड फ्लैटर ओके तो दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन so suppose somebody's utility function is this under root w okay and this risky asset जो इस क्वेश्चन में गिवन है इट इज इक्वली लाइकली टू यील्ड ईदर फॉर रुपीज 400 और रुपीज 900 तो इक्वली लाइकली है विच मीन्स कि हाफ की प्रोबेबिलिटी से 400 रुपीज का रिटर्न है और हाफ की प्रोबेबिलिटी से 900 का रिटर्न है तो यहां से बात आती है एक अनसर्टेनिटी की ओके वी आर नॉट श्योर कि रिटर्न कितना होगा इट कैन बी 400 टू ओके ऑन द वन हैंड इट इज 900 एंड ऑन द अदर हैंड इट इज 400 विच इज वेरी रिस्की तो यहां से रिस्क आ रहा है ऑल राइट तो हाउ डू यू कैलकुलेट रिस्क प्रीमियम तो डेफिनेशन है कि जो रिस्क अवर्स पर्सन जितना अमाउंट गिव अप करने को तैयार है टू अवॉइड टेकिंग रिस्क तो रिस्क आपको दिख गया कहां से आ रहा है रिस्क यहां से आ रहा है बिकॉज जो रिटर्न है वो अनसर्टेन है ओके तो व्हाट इज दी फर्स्टली विल फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रिस्की एसेट ओके तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी हाफ की प्रोबेबिलिटी से रिटर्न है 400 का and with the probability of half he'll get the return of rupees 900 okay so it will be equal to 200 plus 450 which is equal to 650 so this is the expected return from this risky asset okay and what is the expected utility okay तो हाफ की प्रोबेबिलिटी से ही विल गेट रुपीज 400 एंड यूटिलिटी फ्रॉम दिस 400 विल बी अंडर रूट 400 राइट तो हाफ की प्रोबेबिलिटी से उसको यूटिलिटी मिलेगी अंडर रूट 400 एंड सिमिलरली हाफ की प्रोबेबिलिटी से उसे यूटिलिटी मिलेगी अंडर रूट 900 तो इट विल बी इक्वल टू 20/2 प्लस 30/2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 25 तो ये जो यूटिलिटी है ये अनसर्टेन यूटिलिटी है राइट उसे ये यूटिलिटी मिल रही है बट क्योंकि जो रिटर्न्स है वो अनसर्टेन है या तो 400 होगा या 900 होगा ओके तो दिस यूटिलिटी इज अनसर्टेन तो अगर मुझे विद सर्टेनिटी 25 की यूटिलिटी चाहिए तो वो कितनी वेल्थ पर आपको मिलेगी
we want 25 units of utility. Okay, so what will be the amount of wealth that is required? So it will be equal to, squaring both sides, I'll get 625. So 625 is that level of wealth with which he will get 25 level of utility with certainty. Okay, 625 रुपए से उसे 25 यूनिट की यूटिलिटी मिलेगी विद सर्टेनिटी. नाउ लेट्स सी द सिचुएशन इन द ग्राफ. तो फंक्शन है अंडर रूट डब्ल्यू, विच विल लुक लाइक दिस. ओके, सो 400 की वेल्थ पर यूटिलिटी मिलेगी 20 की. 900 की वेल्थ पर यूटिलिटी मिलेगी 30. ओके, what will be the expected wealth? Well, that will be exactly in between, क्योंकि half की, these both are the possibilities with equal probabilities, right? So which is 650 हम calculate कर चुके. Okay, so and what is the expected utility here? It is equal to 25, right? 25 की utility हमें मिलती है 625 की वेल्थ पर विद सर्टेनिटी. ओके, सो यहां से आता है रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट कि एक तरफ अगर आप इस रिस्की एसेट से डील करोगे, ओके, आपकी एक्सपेक्टेड वेल्थ होगी 650. ओके, एंड तब आपको जाके मिलेगी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ 25. ठीक है, दूसरी तरफ विद सर्टेनिटी अगर आपके पास 625 रुपीज है, तो आपको डायरेक्टली उस रिस्की एसेट से डील करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली यूटिलिटी मिल जाएगी 25 की. तो दिस रिस्क averse individual is will be willing to give up 25 rupees. Okay, he will be willing to give up 25 rupees to avoid this risky situation. Okay, क्योंकि 625 से उसको डायरेक्टली 25 की यूटिलिटी मिल जाएगी विद सर्टेनिटी. यहां पर उसे रिस्क से डील करना पड़ रहा है. ओके, सो दिस 25 रुपीज इज द रिस्क प्रीमियम. ठीक है, हेंस द आंसर इज बी. ओके, मैं आपको एक बार यहाँ जल्दी से शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ हमने क्या किया है. आपको 600 आपको 25 की आपके पास एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है. ठीक है, देन व्हाट आई डिड इज कि, और यहाँ पर आपके पास एक्सपेक्टेड वेल्थ जो है वो है 650 की विद सर्टेनिटी. अगर मुझे 25 चाहिए यूटिलिटी, तो फॉर दैट यू विल बी नीडिंग 625 रुपीज. नाउ यू विल बी विलिंग to give up 650 minus 625, okay, to avoid this risky situation, which is equal to 25. So this is your risk premium. Okay, that's it.